Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to all of you. Yes, am I audible? Yes, sir, you are audible. In last class, we have discussed the concepts of goodness of fit on the basis of chi-square distribution. Basically, in section 12.3, we want to determine whether any sample data set or any particular distribution follows some specified, any particular data set follows some specified distribution or not. Mean any particular distribution is fit for this data or not. This one is our objective, mean goodness of fit, whether the distribution is fit for the given data. This topic has a very wide application. Wide application in sense mean in practical sense we have multiple types of data set. Mean data may be follow binomial distribution, data may be follow Poisson distribution, maybe follow hypergeometric, maybe follow normal or not. Mean we extend this topic for each and every distribution, but according to syllabus or according to book, we are restrict or bound our discussion only for two distribution. First one is a multinomial distribution, and the second one is a normal probability distribution. Is the book is visible in front of you? Yes. Book is visible in front of you? Yes, sir. This one. In last class and previous class, we have discussed the multinomial probability distribution. Multinomial mean basically multinomial or multinomial distribution is the extension of binomial distribution. In case of binomial distribution, we have more than two outcomes against each trial. Maybe success, maybe failure. But extension mean if we have more than in case of binomial, we have only two possible outcome against each trial, and one is a success, another one is considered as a failure. And extension of this one mean we have more than two. If we have more than two outcome against each trial, no one is considered as a success and no one is considered as a success. Maybe one is considered as a success, others are considered as a failure. But in this case, our focus is on whether the given data set follow the multinomial distribution with specified probability or not. For example, we have considered the example of market share of detergent. Suppose we have 4 or 5 brands of detergent.
Then on the basis of sample data, we have select the sample of suppose at any departmental store or any city of 200 or around 200 last sale of our most recent sale of 200 detergent. Then our objective is on the basis of the sample data, can we determine that that this sample data is can we conclude that on the basis of the sample results that this sample results follow some specified multinomial distribution or not. Suppose Ariel is a leading brand, and according to their claim that suppose 40% market of the 40% market covered by the Ariel. Suppose Ariel claim that we are the leading brand, or we have a higher leading brand mean we have a highest number of customers of detergent in any market, suppose in particular area. Then our we want to determine whether this claim is true or not on the basis of our sample results. Mean if given data set follow multinomial distribution, or you may be called the given data set support our null hypothesis that the distribution follow the multinomial distribution with specified probabilities or not. This one is determined by with the help of Chi-Square distribution. The given or the sample data is called the observed frequency, and suppose in this case we have three companies, the A, B, and C. Suppose 48 products of company A, 98 products of company B, and 54 products of company C. And we want to determine whether the product, whether the market share is follow this one, for example, this one. Suppose over the past year, market share for a certain product has stabilized at 30% for company A, 50% for company B, and 20% for company C. This one is this data comes from the past experience, or these are the past results. On the basis of sample results, we want to determine whether the sample results support this these probabilities or not. This one is our objective. Then these are called the PI, that is P1 probability of first category, P2 0.5 probability of second category, and the P3 that is probability of third category. This one is our hypothesis. We may be right hypothesis in this form that the population proportion are this mean the actually when we write 3 population proportion mean probabilities against 3 category. This one is also mean that this data is follow a multinomial distribution. Basically data directly relate with multinomial experiment. Mean we have more than 2 categories. And one thing you must be remember that the sum of the probability of the multinomial probability distribution should be 1. This one 0.3, 0.5, and P of A, P of B, and P of C should be equal to 1. And this one is the population proportion are not equal to these 3 probabilities. Mean first we assume that our data follow multinomial distribution against these probabilities. Second one, data does not follow multinomial distribution against these probabilities. To find expected frequencies in case of multinomial experiment, just simply use expected number of X. Mean expected number of binomial distribution is NP. Then in case of multinomial distribution, this one is NPI. Suppose as in case of binomial experiment, we have P is a fix. Mean probability of first specified category is considered as a you may be called successive probability. But in case of multinomial distribution, no category or no group is considered as a specified group or a successive group. Mean all groups have some specified proportion, some specified probability. Then its expected frequency is defined as N into Pi. Suppose Pi mean I values from 1 up to K. Suppose expected frequency of first category is N into P1, second is N into P2, and so on, N into PK. And similarly,
when we write formula for the test statistic, just simply use I subscription. Basically, there is no K meaning of the J subscription or meaning of the column in case of multinomial distribution. The basic difference between uh, test formula for the test statistic in case of multinomial distribution and in case of mm, uh, you may be called hypothesis testing about proportion is that in case of more than equality of the more than two proportion, we have we have written our formula for the test statistic in the form of I and J. I represent the rows, J represent the column. But in case of multinomial distribution, our formula is written only in the form of in the form of I subscription. In this one, I represent the categories. In this case, I not represent the rows. Basically, there is no concept of rows and columns in case of multinomial distribution. Simply use the I, as I represent the number of categories. Multinomial means we have more than two categories. In general, denote number of categories by K. That is I values from 1 up to K. Observed frequencies minus expected frequencies divided by expected. And expected frequency can be computed with the help of basic formula, that is N into Pi. And then later on, after finding the expected frequency, just simply replicate the same procedure as we have discussed in earlier section, that is Fi minus Ei, and then taking the scale, and then the scale term is divided by corresponding Ei, and this one is the value of chi-square test statistic 7.34. On the basis of this test, use the degree of freedom K minus 1. For example, in this case, we have three categories A, B, and C, then K minus 1 is 2. Our final conclusion or last conclusion is that whether the sample data support the proportion of K categories, support to the proportion of K categories or not. This one is our last conclusion. When we reject it, not this means the sample data does not or sample data do not support the null hypothesis, mean the given population does not follow a multinomial distribution. Yes, now we are discussing the next distribution, that is this one is a general, that is normal probability distribution. You maybe note that as per your exam, as per your final exam, the problem related to the normal probability distribution is very much important. I mean, normally in case of goodness of it, and the question from normal probability distribution is set in the final exam or midterm exam. Yes. Do you have any question or query regarding last lecture? Yes. Share your question or queries. Yes. Those students who have prepared the presentation of chapter 12, raise your hand. We want to present the presentation in this class. Please raise your hand. Yes. Tahir, good day. We have now around 26 participants in this meeting. 25 students here. One is your teacher. Yes. Only one student want to present. Any other want to present the presentation in this class? Yes.
Yes. May I start the next topic? ठीक है ताहिर? Okay. Yes. This means that there is no query from student side. And I expect that all of you are clearly understand all the things or concepts which we have discussed in previous classes. We are always very positive. सर हम मिड की तैयारी कर रहे हैं सर, अभी पीछे वाले चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, हम आपसे पीछे नहीं, हैं। आप पीछे से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, तो हम लास्ट लेक्चर में। नहीं वो क्लियर है, अच्छा, लास्ट लेक्चर नहीं पहुंचे ना सर, वो सही है, अभी 9th 10th चैप्टर कर रहे हैं। चैलेंज सही है, इट इज योर जॉब। मेरा एक सवाल है। यस सर, वो जो टाइप 2 एरर वाला था उसमें हम जो क्रिटिकल वैल्यू रख रहे थे, तो किसी में हम क्रिटिकल टेस्ट भी परफॉर्म कर रहे हैं और किसी में डायरेक्ट वो अल्फा की वैल्यू रख रहे हैं लेस देन में, तो ये मुझे समझा दें कि क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट कब परफॉर्म करनी है। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट है जो टाइप 2 एरर वाले Yes. क्वेश्चंस में Yes. जो हम क्रिटिकल वैल्यू परफॉर्म करते हैं, वो हमें कब, मतलब किसी में तो डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू भी रख रहे हैं कि जो लेस देन और समथिंग, वो अल्फा की वैल्यू जो आ रही है जैसे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो उसमें हम 1.9645 ऐसे कुछ रख रहे हैं जो हमें एक्स बार फाइंड करना है, लेकिन कहीं पे हम क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट पहले फाइंड कर रहे हैं। देखिए, क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट हमेशा करेंगे हम। जो साइन है ना उसका सिंबल, वो बेस करेगा जो सिंबल ऑफ H1 है। अगर आपका सिंबल ऑफ मतलब H1 लेस देन में है तो आप यूज करेंगे क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट Z इज लेस देन बाय माइनस जी अल्फा। अगर ग्रेटर देन में है तो Z इज ग्रेटर देन बाय जी अल्फा पॉजिटिव में। अगर टू टेल है तो टू टेल में वी हैव टू पॉसिबिलिटी, मे बी Z इज लेस देन बाय माइनस जी अल्फा बाय 2, मे बी Z इज ग्रेटर देन बाय प्लस जी अल्फा बाय 2। अब आप ये देखेंगे कि जाहिर है टू टेल का मतलब है मीन इज अनइक्वल टू म्यू नॉट। In this case, first observe the value of given value of mu a. Suppose mu आपका hypothesis है mean is unequal to 24 और mu a given at 22, which is smaller than by 22, smaller than by 24. 22 is less than 24. Then used z is less than by minus d alpha by 2. Suppose your given value of mean, which is called mu of a, that is mean under alternative hypothesis, is suppose 27. 27 is more than or larger than 24. This one is the indication that used z is greater than by z alpha by 2. मतलब ये जो क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट है ये हमेशा यूज होगा सेकंड स्टेप में। आपके 5 स्टेप थे ना बीटा कंप्यूट करने के। फर्स्ट राइट नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सेकंड वन इज on the basis of alternative hypothesis हम जो क्रिटिकल वैल्यू मतलब रिजेक्शन रीजन है वो बनाते हैं अंडर क्रिटिकल वैल्यू को। ये तो हमेशा मतलब यूज होगा। यस साकिब, आर यू गॉट इट? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया ना बात कि वो एच ए के साइन पे टू टेल में आपके पास दो ऑप्शन हो जाती हैं, उसमें से फिर आप पिक करेंगे एक ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन म्यू ए। अगर म्यू ए जो म्यू नॉट है उससे स्मॉलर है then use z is less than by z alpha by 2. If mu a is greater than by given mu naught, then use z is greater than by z alpha by 2. Yes, Bakhtavar? ओके सर, बिल्कुल आ गया सर। Yes. सर ये
जो टी टेस्ट है सर, उसमें रिजेक्शन मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि उसमें एग्जैक्ट पी वैल्यू हमारे पास नहीं होती, तो कैसे रिजेक्ट करें एच नॉट को, या फिर डू नॉट रिजेक्ट करना हो तो किस तरह से डिसाइड करेंगे, ये क्राइटेरिया समझ तो नहीं आ क्लियर है रहा ना आपको, पी वैल्यू अप्रोच का सर। क्राइटेरिया। सर वो एग्जैक्ट वैल्यू भी टेबल में नहीं है, तो ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से, शायद उसमें कोई इंटरवल बनाना है, इस वजह से समझ नहीं आ रहा। जो टेबल है वो तो होंगे लिमिटेड वैल्यू के अगेंस्ट हमेशा। टेबल आप अल्फा की साथ यार है, अल्फा की तो इनफिनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन वी कैन नॉट Yes, sir. डिजाइन एनी टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा। ये बीइंग अ ह्यूमन हमारी लिमिटेशन है कि हम उसको इंटरवल में जरूर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सपोज करें आपके पास पी की वैल्यू बनती है, जो अल्फा की वैल्यू बनती है एग्जैक्ट, वो बनती है 0.00005, ठीक। तो अब आपका जो टेबल है वो आपको ये इंडिकेट करेगा कि पी वैल्यू इज लेस देन बाय 0.005 या 0.01, कि 1% से लेस है, ठीक। इसके लिए ना आपको मैं ना एक चीज इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ मैथमेटिकली। व्हाइट बोर्ड इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू? Yes, sir. देखिए सपोज this one, suppose alpha is 5%, already given in or mentioned in statement of the problem. alpha is 5%. आपके पास जो p वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट नहीं आ रही है, बल्कि p वैल्यू आपको आफ्टर with the help of value of test statistics we have determined p value is less than 0.01. less than 0.01 mean smaller number है आपके पास। तो all values which are less than 0.01 obviously less than 0.05. Yes, am I right? Can we say that the all values which are less than 0.05 less than 0.01 is also smaller than 0.05? यहाँ आपके पास 0 है, सपोज करें ये नंबर है 0.01, ठीक। जो आपको टेबल जहां से लिमिट को स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे आपके पास नंबर है सपोज 0.05। अब इन बिटवीन 0.01 and 0 in this range, how many values are fall in this range, Mukhtabar? सर यहाँ पर इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, यस। बहुत Yes, सारी sir. वैल्यूज है ना, असल में किसी चीज को ना दुनिया में जब आप ब्रेक करते हैं ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। आप उसके मैक्सिमम, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी पेपर है, एक पेज है, उसको मैंने मतलब पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हाउ मेनी पॉसिबल पॉइंट्स, पॉसिबल पार्ट्स, इनफिनाइट पॉसिबल पार्ट। किसी भी चीज को आप माइनर से माइनर, डाइल्यूट से डाइल्यूट करते जाते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं होती। ये जो लोग एटम पे रिसर्च करते हैं ना, मेन साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, जो एटम पे रिसर्च करते हैं, एटम क्या है, मैटर का सबसे मिनिमम से मिनिमम पार्ट है ना। उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन भी हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, मतलब मल्टीपल चीजें हैं ना उसके अंदर एटम में। तो वो जब एटम की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो मतलब उसके थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ जो पार्ट्स होते हैं ना, उसको जाके स्टडी करते हैं। तो उसकी एग्जिस्टेंस के लिए मतलब उसको उसकी विजिबिलिटी के लिए जो है ना बड़ी माइक्रोस्कोप बनाई जाती है दुनिया में। तो एक सन एक इदारा है मेरे ख्याल है स्वीडन के अंदर,
जो उसका कोई स्टूडेंट सर्च करना चाहे साइंस में जिसका इंटरेस्ट हो, तो वो सन में ना टनल्स हैं जिसमें वो सिर्फ उस एक एटम का जो मतलब स्मॉल पार्ट होता है ना, एटम का स्मॉल पार्ट, एटम इटसेल्फ इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ मैटर, तो एटम के स्मॉल पार्ट को भी जाके वो स्टडी करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, मतलब किसी चीज की दिस वन इनफिनाइट, ठीक है, मतलब हाउ मेनी पॉइंट्स फॉल इन बिटवीन 0 एंड 01, दैट इज इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट फॉल इन बिटवीन 0 एंड 01। अच्छा, अब अगर आप देखें कि दायरा में कोई भी नंबर है, तो ऑल वैल्यूज विच आर लेस देन 0.01 आर ऑब्वियसली लेस देन 0.05। Yes, do you agree with the statement? The all values which are smaller than 0.0501 is also smaller than by 0.05. Yes, बख्तावर? Yes sir. Yes sir. तो क्लियर हो गया हमारा? अब रिजेक्शन जी, होगा sir. या एक्सेप्टेंस होगी? क्राइटेरिया क्या है आपका? If p value Sir, p value less than alpha, reject less than H or naught. equal to alpha, then we reject H naught. ये क्राइटेरिया ना Yes. आपका? तो जब p Yes, sir. वैल्यू 5% से लेस है, तो इट्स मीन कि सैंपल डाटा सपोर्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, then reject H naught. Reject H naught. If p value is less than alpha, then we reject H naught. Yes, are you understand? सर एग्जैक्ट Yes, वैल्यू sir, फाइंड yes. करना तो सर एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहें तो देन यूज एनी सॉफ्टवेयर, एक्सेल यूज करें। एक्सेल में आप जब डाटा के बाद p के बाद उसको चले मैं आपको ना एक परफॉर्म करता हूँ एग्जैक्ट p वैल्यू, तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट नंबर देगा। फॉर एग्जांपल असल में सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो डायरेक्ट जो टी का फॉर्मूला है ना, जिससे टेबल जनरेट हुआ है, उसको यूज करता है। तो फॉर्मूले की हेल्प से तो आप कोई भी काम कर सकते हैं ना, मतलब किसी भी वैल्यू की आप फाइंड कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में वो जो एक्सेल है उसमें पहले से वो बिल्ट इन हुआ है टी का पीडीएफ। तो सॉफ्टवेयर itself use this PDF, built-in PDF, and determine the value, exact value of. Sir, Yes. सर ये जो अल्फा है ये तो इंटरवल के दोनों साइड्स पे आ सकता है ना, कि मतलब राइट साइड पे भी या फिर लेफ्ट साइड पे। सो मतलब ग्रेटर भी हो सकता है इंटरवल से या फिर लोएस्ट भी हो सकता है इंटरवल से, तो दोनों साइड दोनों ही सिचुएशन में हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर टू साइडेड हो। यस सर, टू साइडेड है। ओके सर, ठीक है। अगर आप ये आप जो बता रही ना लतावर, दिस वन इज Yes, अ sir. क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। यस सर, इसी में इशू था क्योंकि अगर ये p इंस्टेंट वैल्यू में तो इंटरवल एक है ही ना। क्राइटेरिया है, p वैल्यू में तो p वैल्यू इज लेस देन अल्फा, देन रिजेक्ट इज नॉट, अदरवाइज। ये सर पी वैल्यू तो आ जाता है, लेकिन क्रिटिकल क्रिटिकल वैल्यू में में अगर टू टेल है तो फिर आपके पास यू हैव टू ऑप्शन, if t is less than by minus t alpha by 2 or maybe t is greater than by positive t alpha by 2, then reject H naught. ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। देखें आपको ना, अब आप जाहिर है p वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं, आपको now when you will see any research paper, specifically मेडिकल साइंसेज के रिसर्च पेपर्स, मेडिकल साइंसेज में हर तरह की रिसर्च जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स होती है। आप फॉर एग्जांपल ये कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये इन्होंने कुछ टाइम पहले सक्खर में भी अपनी जो मतलब पब्लिसिटी के लिए जो नई प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए सक्खर में भी स्टॉल्स लगाए थे आईवीए के अंदर। बाहर से भी बहुत सारे लोग आए थे, उनको बुलाया था। वो मार्केटिंग करते हैं, तो वो किसी प्रोडक्ट मीन मेडिसिन को, किसी प्रोडक्ट की मेडिसिन की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो उसके साथ वो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट शो करते हैं कि हमने इतने पेशेंट्स पे इसको मेडिसिन को यूज किया, उससे ये रिजल्ट्स आया है। और अब देखिए वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से प्रॉपर वैल्यू निकालते हैं।
वैसे बायोस्टैटिस्टिक्स अलग से स्टैटिस्टिक्स है, मतलब क्योंकि जाहिर है पंजाब यूनिवर्सिटी वाले अलग से सेपरेटली बायोस्टैटिस्टिक्स में एमएससी और पीएचडी करवाते हैं, एमएससी भी है उनके पास। और बायोस्टैटिशियन जो होते हैं वो यही स्टैटिस्टिक्स की सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं इन मेडिकल साइंसेस। लेकिन अब नेक्स्ट अगर आपको कभी उनके कोई जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनकी या उनके बिल बोर्ड्स हैं, जो वो छोटे स्मॉल बिल बोर्ड्स होते हैं, उनको कभी देखने का इत्तेफाक हो तो आप देखेंगे कि जब वो मार्केटिंग करते हैं ना, तो वो अपने मार्केटिंग में जो मेन चार्ट या कह लें आप साइन बोर्ड टाइप चीज होती है उनकी, उसमें सबसे नीचे उन्होंने पी वैल्यू लिखी होती है, तो उन्होंने हाईलाइट किया होता है। जब जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, वो कभी क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच कोई मतलब सूटेबल अप्रोच नहीं है। अगर आप दोनों में से कंपेयर करें ना पी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू को, तो पी वैल्यू जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम सैंपल से आती है। पी वैल्यू जितनी स्मॉलर है, इसका मतलब है सैंपल डाटा आपका एच नॉट को उतना ही रिजेक्ट कर रहा है, और यूजली एच नॉट की रिजेक्शन ही हमारे लिए मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। एच नॉट की रिजेक्शन का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग से हमारे रिजल्ट्स डिफर कर रहे हैं, एच ए को हमारा सैंपल डाटा सपोर्ट कर रहा है। तो अब इन फ्यूचर में कभी आपको वो देखने का वो जो साइन बोर्ड है उसका इत्तेफाक हो, तो आप देखेंगे बिल्कुल एंड पे पी वैल्यू हाईलाइट हुई होती है। ठीक, किसी भी टाइप की जो मतलब मार्केटिंग है ना इनकी मेडिसिन की, तो बिल्कुल एंड पे लिखा होगा पी वैल्यू सपोज लिखी हुई है 0.000001। तो ये जितनी स्मॉलर होगी ना पी वैल्यू, तो इट्स मीन आवर सैंपल डाटा सपोर्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पी वैल्यू जितनी लेस होती जाएगी, अल्फा तो हमने एक बेंचमार्क रखा हुआ है ना कि अल्फा से लेस होनी चाहिए। पी वैल्यू के लेस होने का क्या मतलब है कि टाइप 1 एरर स्मॉलर है, कि वी मे रिजेक्ट एच नॉट एंड एच नॉट इज ट्रू। देखिए जब भी आप सैंपल की बेस पे कंक्लूजन ले रहे हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, मे बी अवर कंक्लूजन इज फॉल्स, मे बी वी रॉन्गली रिजेक्टेड एच नॉट। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? यस, रिप्लाई करें मुझे कि व्हेन वी आर टेकिंग द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रिजल्ट्स, देन first objection on this decision is that maybe we wrongly accept reject at not। तो ये जो wrongly rejection के chances हैं, this one is called type 1 error। तो p value itself type 1 error। type 1 error और p value में just इतना सा difference है कि p value is computed from sample data and type 1 error is predefined। खुद से fix कर लेते हैं, मतलब आप 5% रख लेते हैं, 1% रख लेते हैं आप। तो जाहिर है जो चीज आप खुद से डिफाइन करते हैं और जो चीज सैंपल से आती है, उसमें प्रेफरेबल कौन सी होगी, सैंपल की होगी। इसीलिए आप मेडिकल साइंसेज की सारी रिसर्च में जो वो अपनी रिसर्च का एक सिग्निफिकेंस शो करना चाहते हैं ना कि हमारी कितनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स है, तो वो फिर बताते हैं कि पी वैल्यू क्या है आपकी। तो आप इन फ्यूचर में जाहिर है कहीं ना कहीं पे आपको रिसर्च पेपर पढ़ने का देखने का इत्तेफाक होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी वैल्यू। देखिए आप अपने क्विज की मिड टर्म की जो है वो प्रिपरेशन जरूर करें, लेकिन साथ साथ आप जो प्रेजेंटेशन है वो भी प्रिपेयर करें। प्रेजेंटेशन तो मतलब एक रूटीन मैटर है हमारा। तो आज तो सिर्फ वी हैव ओनली 1 स्टूडेंट, और भी किसी ने प्रेजेंट करना चाह रहा है तो मे रेज योर हैंड। तो नाउ वी हैव ओनली 1 स्टूडेंट आउट ऑफ मोर देन 30 स्टूडेंट्स। These are the graded presentation। आफ्टर एंड आपको जो सेशन मार्क्स हैं उसमें जो स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आई हैव नोटेड द नेम विद द स्टार्स, उनको ग्रेड जहाँ मैं दे रहा हूँ। तो एट द एंड में उनको मतलब डिफरेंशिएट जरूर करूँगा फ्रॉम अदर स्टूडेंट हु हैव प्रेजेंटेड दीज presentations। Okay. Now we are started the next chapter, next section of 12.3, that is the next distribution is, first one is a multinomial and the second one is a normal probability distribution. Second one is
normal probability distribution. Normal probability distribution mean our null hypothesis that the population follow a normal probability distribution. The population of given data follow in normal distribution. Normal probability distribution. And alternative is this one, our first step, that formulate null and alternate have the population of given data does not follow this one, doesn't follow a normal distribution, normal probability distribution. This one. Use chi-square statistics to test this hypothesis. That is this one. Test statistics defined as same like multinomial distribution. I values from 1 up to k. K are the number of categories into observed frequencies. Fi minus expected frequency, Ei, and scare divided by Ei, expected. And this one is based upon n number of data values minus k number of categories, k number of categories minus p. P are the unknown parameter minus 1 degree of freedom. I mean, this one is based upon k minus p minus 1 degree of freedom. And p is defined as where p is number of, k are the number of categories we have already denoted. P is the number of unknown parameter. P are the number of unknown parameters. Number of unknown parameter.
unknown parameters. And unknown parameter mean normal distribution has two parameters. It's mean and sigma. Mean in case of normal distribution, value of the p is always 2. P is equal to 2. Mean and sigma are normally unknown. When mean and sigma are unknown, then use x bar sample mean and sample variance s square to estimate mean and sigma. K minus p minus 1 degree of freedom. This one is a formula for Chi-Square. And the next procedure, which is different from multinomial distribution, is that how to compute, how we will compute, or we can compute expected frequency in case of normal probability distribution. Basically, the given data set, suppose we have n is equal to 50 values are given. Okay? Then we assume that the expected frequency, on the basis of this assumption, that the expected frequency of each class should be 5. Assume expected frequency of each class, mean EI, I varies from 1 up to k. Suppose we have k classes or k number of categories, then expected frequency of each class is should be at least 5. Then to find k, divide number of data values. If we have 50 data values, then divide number of data values by 5. 50 divided by 5, which is equal to 10. Mean to find observed frequencies, first divide the data into 10 categories. 10 categories mean normal probability distribution. Suppose this one, total area under the curve is 1, mean 100%. Then distribute normal distribution into 10 categories. First one is 10%. Mean first group contain the 10% of the data values. The next group is contain 20% data values. The third one contain 40% data value, 30% data values, and the fourth one contain this one. Suppose fourth one contain 40% data values, and the last one contain 50% data values. Sorry, middle one, and mean fifth group contain 50% data value. In between 40 and 50, 10%. Each group contains this one. Sixth one is 60%. Similarly, seventh one is contains 70%. 70% data values below to this point, and eighth one contain 80% data values, and the ninth or last one contain 90%. Mean 90% data values below to this and 10% data values above to this. Then this one, against 50% data values, our value of z is 0, because mean of the standard, we have already known that mean of the standard normal distribution is 0. And this one, the point which has 10% data values less than this point is called z1, which is minus. Obviously this one is z1 is negative. Similarly, this point is called z2, that 20% data values left of the z2, 30% data values left of the z3, and z3 is also negative, and 40% data values left of the mean corresponding point on x-axis is called z4, which is also negative. And similarly, this one z5 is 0, as mean of the standard normal distribution is 0.
Similarly, Z6, Z7, and the last one is called Z9. Z9 mean the point you आप find करेंगे with the help of inverse area table. ZIs are computed. This one, ZI, I varies from 1 up to K. The range of I is 1, 2, 3, up to K. ZI are computed by inverse area table. Computed by inverse area table. Inverse table. Inverse table mean, for example, Z7. For Z7, search 0.70 in Z table and the corresponding value of Z against 0.70 is called Z7. Means Z7 is equal to, for Z7, for example, if we want to compute Z7, Z7 means 70% data value left of the, as we have considered size of each classes. K are the number of classes 10 and size of each class is also 10. K are the number of categories and just 1 minute. Whiteboard is visible in front of you. Yes. Is the whiteboard is visible in front of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, It's sir. visible. This one is a H. H means size of each class. We are considered the size of each class is 10%. Then number of classes mean, meaning that we want to distribute 100% data values. This one, in this case, by chance, H and K are same. This one, K is equal to, mean we want to distribute 100% data values in to the classes with size of each class is 10. When we divide 100 divided by 10 is all, this one is result is also 10. Basically, K are the number of classes and number of classes. In this case, known that is the 70% of 70% data values are left. Okay, now solving the question related to the
Book is visible in front of you. Yes, sir. देखिए first question mean from non-application 19 is based upon the multinomial distribution. 20 is based upon normal population. The following data are believed to have come from a normal distribution. Use the goodness of fit test. Test this claim. And we want to test that whether this data follow a normal or the population of this data set follow a normal distribution or not. This one. Test this claim mean कि इस belief को आपने test करना है कि whether the data follow from a normal distribution or not. Similarly, 21, which we have solved in last class, is based upon the concept of multinomial. In this case, and this one is also based upon multinomial. लेकिन इसमें ये 22 में ना आपको जो टेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका लास्ट पार्ट पढ़ता हूँ. Use the 5% level of significance in the sample data. Test the hypothesis that the overall proportions for the color are stated above. फॉर एग्जाम्पल देखें, ये उसने ओवरऑल प्रोपोर्शन दी है कि 24% ब्लू की, 13% ब्राउन, 20.20 ग्रीन, 16% ऑरेंज, 13% रेड, 14% येलो. In a sampling distribution, 7 bags of M&M milk chocolate were opened. The following colors count were obtained. ये आपने sample data लिया और we want to determine that whether the sample data follow a given distribution or not. Similarly, 23 is also from multinomial, 24 also from multinomial, 25 and 26 is based upon normal distribution. Okay, read 26 question. Shafiq, are you here? Yes, sir. We read करें problem 26. Sir, I'm in बाजार side, so मैं यहाँ पे शोर बहुत है. मार्केट में आप क्या कर रहे हैं मार्केट में आप? सर यहाँ घर साइड पे सिग्नल नहीं आते तो हमें बाहर जाना पड़ता है शहर की तरफ. अब मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ. अच्छा, शहर की तरफ जा रहे हैं. सिग्नल प्रॉब्लम में कहाँ से आप? शफीक, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? सर जोब है. अच्छा, बलूचिस्तान में. बलूचिस्तान. अच्छा, बलूचिस्तान में. ओके, दीवान. यस, दीवान. बिलाल. बिलाल. सलमान, मोहम्मद सलमान. 33. May I read, sir?
मैं असल में स्टूडेंट्स से करवाना चाह रहा हूँ, मुझे भी पता चले कि हाउ मेनी स्टूडेंट who has attended the full class and who is partially attended. हर चीज की ज़ाहिर कैटेगरीज है ना. Few students are attended whole class, few are partially attended. Okay, Salman, you have mic issue. Okay, second Salman, 2, 3, 4. Okay, Salman, ठीक है. Yes, Salman, 2, 3, 4. Are you here? Yes, sir. आप read करें. Now read the problem 16. सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. अच्छा, just 1 minute. Now. Yes, sir. अब हो रही है. Problem 26, sir. The weekly demand for a product is believed to be normal distributed. Use goodness of fit test and following data to the test to this assumption. Use alpha equal to 0.10. The sample mean is 24.5 and the sample standard deviation is 3. सर इसमें ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें डेटा दिया हुआ है और जो अल्फा दिया हुआ है वो 0.10 है. उसके साथ गुडनेस ऑफ फिट हमें यूज करके फॉलोइंग डेटा को यूज करते हुए सैंपल मीन दी हुई है 24.5 एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 3. जो फर्स्ट है इसकी सॉरी ये समरी है सर. सॉरी सर ये डेटा दिया हुआ है हमें गुडनेस ऑफ फिट मालूम करनी है. गुडनेस ऑफ फिट होना इस डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है. क्या कह रहे हैं सर आप? Which distribution we want to fit this data set are determined. किस डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना चाह रहे हैं हम? सर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया हुआ है ना. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं? सलमान, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सर 2 पैरामीटर्स होते हैं सर. 2 होते हैं ना. विच वन? ठीक कह रहे हैं 2 सर एक तो जी सर एक तो मीन और एक स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ होता है और सर उसके अंदर वो हमने जो पढ़ा था सर 68% वो जो प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 95% होता है. एंड सर एक और भी तो सर था ना 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ भी था सर वो जो 99.7% हमने पढ़ा था एम्पिरिकल उसमें शेप जो बेल शेप कर्व थी सर लास्ट टाइम जो पहले हमने पढ़ा. देखिए वो ना आपको ये बताती हैं दीज आर द एम्पिरिकल रूल्स जो आप बोल रहे हैं कि मीन प्लस जी सर कितने परसेंट डाटा होता है 68% राउंड और 95.45% डाटा होता है मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा में एंड मीन प्लस माइनस 3 सिग्मा में अराउंड 99% डाटा होता है. सर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तो 2 पैरामीटर्स हैं ना सर. एक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन. नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल के दोनों के 2 ही होते हैं. वही सेम है बात. ठीक है सर. There is no difference between normal and standard normal. Standard normal भी normal ही होती है एक्चुअली, लेकिन वो standard का मतलब होता है उसमें mean 0 और variance 1 है और normal में जैसे ये डाटा सेट है आपके पास. अच्छा देखिए इसमें ना उसने सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन भी गिवन है. ये डिमांड का डाटा है. यू हैव डिमांड वीकली डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज बिलीव टू बी द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब हम ये बिलीव करते हैं कि जो डिमांड है वो अपनी एवरेज पे मैक्सिमम होती है और जितना आप एवरेज से डेविएट करते जाते हैं इट इज अप्रोच टू द जीरो. डिमांड दिस इज आवर बिलीव दैट द वीकली डिमांड डाटा फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं, ये तो चले हमारी assumption है कि हर चीज अपनी एवरेज पे मैक्सिमम होती है. तो क्या ये डाटा जो है use a goodness of fit test to following data to test the assumption that alpha is 0.10 mean at 10% डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपने डिटरमाइन करना है कि क्या ये जो वीकली डिमांड है ये नॉर्मल को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही. तो द सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑलरेडी गिवन. ऐसे नॉर्मली इस क्वेश्चन में ना आपको मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन कंप्यूट करना पड़ता है.
तो आप कर लेंगे ना, मीन स्टैंडर्ड डिवीजन इंक्लूड करने में तो इशू नहीं है ना आपको, एक्सेल से भी हो जाता है, डायरेक्ट भी हो जाता है, मैनुअल भी कर लेंगे। यस कोई आपको इशू तो नहीं है ना? तो नहीं सर, हो कंट्रोल, जाएगा ये तो। अच्छा आप देखें ये डाटा सेट जो है ना, मैं इसको एक्सेल में ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें से क्योंकि हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज काउंट करनी है, तो मैं एक्सेल में ये काम कर लेता हूँ, जो कि व्हाइट बोर्ड पे हम करते हैं नॉर्मली। फॉर एग्जांपल this one, the file name is demand. Now we are opening this file on Excel sheet, Excel worksheet. Yes, Excel sheet is visible in front of you. Yes, sir. Okay. Yes, These sir. are the weekly demand, mean demands against 30 weeks. Mean number of data values are 31, mean demands again 30 weeks. So n equal to 30. Mean given आपको x bar, which is equal to 24.5, मतलब weekly demand on the average जो weekly demand है, that is 24.5, and the standard deviation is 3. ठीक है, ये डाटा से आपको given, otherwise आप you can easily compute mean and standard deviation from this data. Okay. First we write down null and alternate hypothesis. Question number 26. We want to test this belief that the weekly demand of the product follow a normal distribution or not. Then our null hypothesis is the weekly demand of a product mentioned product लिखना है आपको product. This is the weekly demand of product follow in null hypothesis. We are tentatively assume that our data set follow a normal distribution. This one follow a normal probability distribution. Normal probability distribution. This one. And its alternative hypothesis HA is the weekly demand of a product, of mentioned product, doesn't follow a normal probability
distribution. This one. Okay. Test statistics based upon chi-square distribution. This one. Observe fi minus expected ei square and I values from 1 up to k categories. We have already defined its degree of freedom, that is E degree of freedom is k minus p minus 1. तो k भी हमने डिफाइन नहीं किया है. k जब डिफाइन कर लेंगे तो आफ्टर दैट हम ये कंप्यूट p तो 2 होगा ना, k minus p2 क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. असल में ना ये तो k minus p minus 1 है ना, ये इज द जनरल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मली अगर आप देखें कि इसके अलावा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यहाँ पे असल में है नहीं, बायनॉमियल होती तो फिर आपके पास n और p अगर गिवन ना होता तो p इसको 2 रख लेते, कोई एक गिवन सेकंड को अज्यूम कर लेते. तो ये p2 है आपके पास, ठीक है. दिस वन इज ए p, तो ये k minus 3 हो जाएगा. k हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम गिवन डाटा, k p is equal to 2 मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन. Now yes, Excel sheet is visible in front of you. Yes sir. Okay, देखिए we have 30 values, मतलब we have given demand of a product against 30 weeks. फर्स्ट वीक में 18 प्रोडक्ट की डिमांड थी, 18 यूनिट्स की. नेक्स्ट वीक में 25 यूनिट्स की डिमांड है. थर्ड वीक में 26 है. तो ऑन द एवरेज जो डिमांड आई है वो 24.5 है, और विद स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ रहा है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरी कर रही है along 3 standard deviation. Up now, suppose first find h. H are the number of size of the class, that is number of data values. This one n divided by 5. 5 क्या था? 5 क्या है? कोई बताएगा स्टूडेंट 5 क्या है? h is equal to 6. yes, ये 5 क्या है? we assume that expected frequency of each class should be follow the basic assumption of chi-square distribution, that expected frequency should be equal to 5. This one ei is equal to 5. तो ये 5 आप हमेशा फिक्स रखेंगे. h6 का मतलब ये हुआ कि we want to distribute the 100% data into the 6 classes. Then size of this one is size of each class, and the next one is number of classes. Number of classes. Number of classes is k. K is equal to 100%. We want to distribute 100% data values into the classes. That size of each class is 6. Then this number is 100 divided by 6 करें. यहाँ हम कर लेते हैं ना 100 divided by 6, तो 16.67. 16.2 डेसिमल तक रखिए. 16.67 means size of each classes. देखिए वो जो मैंने आपको जनरल एग्जांपल दी थी ना, मैंने अज्यूम किया था ये असल में मैंने बुक एग्जांपल कोट किया है. बुक में जो एग्जांपल सॉल्व हुई है ना, इन दिस केस यू हैव 50 डेटा वैल्यूज. तो साइज ऑफ ईच क्लास, सॉरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वी अज्यूम फॉर ईच क्लास इज 5. तो जब हमने 50 को 5 पे डिवाइड किया 10 आया, तो 100 को भी 10 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट 10 था. तो वहां बाय चांस साइज ऑफ द क्लास एंड नंबर ऑफ क्लासेस सेम आए थे, लेकिन इन जनरल वेरी करेगा. फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी हैव 30 डाटा वैल्यूज, तो 30 आर नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय each expected frequency, that is 5. 30 divided by 5 is 6. Then
total 100%, we want to distribute 100% data values into 6 classes. That is 100 divided by 6, which is equal to 16.67. Okay, now we are making classes on this one, that is percent. This one is called percentages. देखिए परसेंटेजेस हम कैसे लिखेंगे, ये मैं अब नेक्स्ट टेबल बना रहा हूँ. फर्स्ट कॉलम इज रिप्रेजेंट परसेंटेजेस. परसेंटेजेस मीन फर्स्ट जो क्लास होगी ना आपकी वो होगी 16.6% पे, ठीक, 16.6%. 16.6% में दोबारा आप 16.67 ऐड करें, द रिजल्ट इज, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए 16.67 में हम प्लस कर देते हैं दिस वन, तो नंबर आ रहा है, नहीं सर वो परसेंटेज में ही ऐड हो गया, दिस वन 16.67 ही ऐड कर देते हैं, तो नंबर आ गया आपका 16.67 प्लस 16.3. सर ये ऊपर भी परसेंटेज रिमूव करके फिर वो रख, वाले को तो हमने कंसीडर भी नहीं किया ना. 16 32 हो गया, तो 33.67 है, 33.4, तो ये ऐड होके हो जाएगा आपका नंबर. वैसे हम कैलकुलेटर पे इसको ऐड कर लेते हैं सर 33.34. 16.67 प्लस 16.67, जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 33.34. ठीक है, इक्वल साइन रिमूव करते हैं, 33.34%. ठीक. नेक्स्ट वन इज 33.34 में अगेन ऐड करें 16.67 प्लस 16.67, 50.01. 50.01. Next one is again add 33.67, 16.67. ये नंबर आपके पास आएगा, ऐड करें. $66.68. 66.68. Next one again add 16.67. 83.35. 83.35. देन अगेन ऐड करें, बल्कि अब तो कंप्लीट हो जाएगा ना. There is no need to make another group. देखिए ना, the last हो गया ना, last one can also continue. देखिए these are 5 values, mean 5 values distribute 100% data into 6 categories. Am I right? यस सर ऐसे ही है. डाटा वैल्यूज एक कम होती है ना, मतलब मीन एक नंबर है जो कि डाटा को डिवाइड कर रहा है इनटू 2 पार्ट्स, 50% लेफ्ट 50% राइट. तो जो 5 वैल्यूज होंगी वो डाटा को डिवाइड करेंगे इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 5 parts. नहीं 5 में तो नहीं करेंगी. रस्सी को एक जगह से काटें तो कितने हिस्से होते हैं उसके? इफ यू कट द रोप 2 सर into one place, then how many parts of this rope? You get 2 और parts. 5 दफा काटेंगे तो 6 हो जाएंगे. 6 पार्ट हो जाएंगे, एक Yes, ज्यादा हो sir. जाएगा. किसी को चीज को भी आप 5 दफा काटेंगे तो उसके 6 पार्ट्स होंगे. तो ये देखिए ये 5 वैल्यूज आएंगी ना, तो लेकिन ये these 5 वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट द गिवन डाटा, मतलब 100% डाटा इनटू 6 कैटेगरीज. अभी मैं बनाऊंगा आगे कैटेगरीज. यस, अब देखिए इसके बाद ना इसको नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है Z स्कोर का.
First one is percentages, मतलब percentages of each group. Then Z score और फिर टेस्ट वैल्यूज. लेकिन Z स्कोर के लिए आप Z टेबल पे जाएंगे, Z लिख लें, Z वैल्यूज लिख लें, Z स्कोर, Z वैल्यूज, Z स्कोर नहीं, Z वैल्यूज होंगी, वैल्यूज. यस, आप ऐसा करें कि Z टेबल पे जाएं और 0.1667 को सर्च करें कि वो कहाँ पे है, वैल्यू क्या है, अगेंस्ट विच वैल्यू यू विल ट्रेस 0.1667. Z की वैल्यू क्या है? The corresponding value of the probability 0.1667 is सर्च करें Z टेबल पे. सर 0.9 minus 0.97. 0.97, ठीक है, -0.97. ओके, नेक्स्ट आप सर्च करें 0.33334, मतलब 0.334, जो भी क्लोजेस्ट नंबर है, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ Z, मतलब अगेंस्ट विच वैल्यू ऑफ Z the area is 0.337. 0.33 मतलब 0.334 against which value of Z? Which value of Z we have traced, or we will have to trace this one. minus 4.43 sir. Minus 43 43 या 46? 43 है सर. 43. ओके, अब देखें 50.01, ये ऑलमोस्ट जीरो होगा. 0.501 क्या नंबर आ रहा है? इसको ना परसेंटेज में देखिए ना, 0.5001. 0.50 तो बिल्कुल आ गया आपका जीरो पे. ये ऑलमोस्ट जीरो है या जीरो से के अलावा कुछ 0 पॉइंट समथिंग है? आपने वैल्यू साइज करनी है सर 0 सर 0 है. 0.0 ही उस पे सर 0.000 आ रहा है. 0.000 आ गया, ठीक है. नेक्स्ट वन आप सर्च करें Z टेबल पे, देखें अब these values are fall right of the mean. First two values are fall below to the mean. Below to the mean means Z is negative, and this one Yes, is equal to the mean. So mean standard normal distribution is 0. Now we will have trace the values, or we want to trace the values of Z against 0.6668, mean 0.668. ये अब आपको पॉज 0.43 सर. ठीक है. एंड सिमिलरली लास्ट Yes, sir, वैसे ही वैल्यू आ रहे हैं सर. 0.43 0.097. ना सिमेट्रिक. आपने कभी पानी को देखा? यस सर, बिल्कुल ये है. पानी क्या होता है? पानी का सरफेस क्या होता है? यस सर, 0 लेवल पे होता है. नहीं, पानी का सरफेस बराबर होता है हमेशा. यस सर, 0 उसमें स्लोप होता है ना सर. हाँ, 0 स्लोप होती है उसकी, बिल्कुल. तो वो जहाँ पे भी जाए पानी, वो हमेशा किसी बर्तन में भी डालें, ऐसा नहीं होगा एक साइड से ज्यादा होगा एक साइड से कम होगा. मिट्टी को देखा है ना आपने? मिट्टी का ढेर देखते हैं ना? यस सर, उसमें अप्स एंड डाउन होते हैं. अप्स एंड डाउन होते हैं. कभी पानी का ढेर देखा है आपने? ये मुझे नहीं पता अंग्रेजी में इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, अप्रोप्रिएट वर्ड.
लेकिन लेक वगैरह मट्टी का ढेर होता है, पानी का ढेर नहीं होता। पानी का सरफेस होता है। पानी की ये खूबसूरती है कि पानी हर जगह पे अपना लेवल सेम रखता है। दिस वन इज सिमेट्रिक, इसी को सिमेट्रिक कहते हैं ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लियर नजर भी आ रहा है आपको, मतलब फर्स्ट क्लास है, कंटेन 66.67 area and the corresponding value of z is -0.97, and the second class contain 33.34% area and the value of z is -0.43, and the last class mean left of the last class is 83.35% data values and 16.67% data values are right of this class. ठीक, अच्छा इसके बाद आप देखिए अब हम ना निकालेंगे टेस्ट कोर। टेस्ट कोर का कॉलम आपका बनेगा टेस्ट स्कोर्स। टेस्ट कोर इस तरीके से कंप्यूट होते हैं। देखें आप ये जी का जरा फॉर्मूला समझें। जी इज डिफाइंड एज एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि x is equal to z into स्टैंडर्ड डेविएशन, या चले हम मीन राइट पे ले गए, मीन पॉजिटिव हो गया, मीन प्लस z into स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, z मल्टीप्लाई के लिए हम साइन यूज करते हैं दिस वन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, एम आई राइट? x is equal to मीन प्लस z into स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो टेस्ट कोर है ना, ये बेसिकली x होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए पहली वैल्यू पे है, मैंने जो कि इसको ऐड करना है तो मैं ना फंक्शन यूज कर लेता हूँ। देखिए टेस्ट स्कोर किसके को होगा, मीन। मीन कहाँ पे है हमारे पास, मीन इज चले मैं अभी इसको फर्स्ट में ना 24.5 ऊपर लिखा है। तो ऐसे लिख लेते हैं, मैनुअली करते हैं 24.5 मीन, और वैल्यू ऑफ जी क्या है, प्लस यूज करते हैं दिस वन, 0.97 मल्टीप्लाई करते हैं किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्टैंडर्ड 3 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया 21.59। नेक्स्ट पे हम आते हैं, मीन इज 24.5, तो ये मतलब नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि ये जी नेगेटिव है, और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, इसको आप चाहें तो एक्सेल में कर रहे हो तो आप इस फंक्शन यूज करके ड्रैग भी कर सकते हैं। यू कैन आल्सो मतलब ड्रैग मीन रेप्लिकेट द सेम फंक्शन अप टू सम। व्हेन z 0 तो मीन ही रह जाएगा 24.5। ठीक है, द नेक्स्ट वन मीन 24.5 और प्लस z multiplied by standard deviation, and the last value is mean 24.5। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें, z स्कोर टेस्ट स्कोर का मतलब होता है x की वैल्यू, x मीन मीन प्लस z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। z आप परसेंटेज से निकालेंगे, 24.5 प्लस z मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू 3। ये नंबर आ गया टेस्ट स्कोर। अच्छा देखिए अब हम इसके बाद इंटरवल बनाएंगे। असल में ना हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालें। ये तो 30 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है ना, हमने अज्यूम किया कि हर क्लास की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, उसके अगेंस्ट ऑब्जर्व क्या आती है। एक्सपेक्टेड तो अज्यूम कर ली, एक्सपेक्टेड फाइंड करना हमारा पर्पज ही नहीं है इस केस में, ऑब्जर्व फाइंड करना पर्पज है। ठीक, तो ये तो 30 वैल्यूज हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलॉन्ग 6 ग्रुप, sorry along yes
नहीं ये ऐसे हो गई, देखिए मैंने चेंज कर दिया ये। सर इसका मतलब तो ये हुआ ना, जो हमारे पास रहा डेटा है हाँ, अब हमने ये उसको देखिए पहले ग्रुप में कन्वर्ट किया। जस्ट 1 मिनट, ये आपका जो साइज ऑफ क्लास है ये बन रहा है 16.67 और जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो बन रहे हैं 6। ठीक है, तो हम ये चेंज होगा, ये आपके पास होगा के और ये आपके पास जो सेकंड वन है ये होगा आपके पास एच। ठीक, मतलब साइज ऑफ ईच क्लास हमने रखा है 16.67 और नंबर ऑफ ग्रुप कितने बने हैं 6। ओके जी, अब आप नेक्स्ट जो हमारा कॉलम बनेगा दिस वन इज ए टेस्ट स्कोर इंटरवल और फिर उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने पहले से ज्यूम की है। देखिए टेस्ट स्कोर, ये टेस्ट स्कोर जो हमने फाइंड किया ना इनके इंटरवल फाइंड कर लें 6 इंटरवल में। इंटरवल्स देखें बहुत सिंपल सा काम है। असल में ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होती है -∞ से +∞। तो आपका पहला इंटरवल बनेगा लेस देन फर्स्ट वैल्यू लेस देन 21.59। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल बनेगा आपका इन बिटवीन 21.59 टू 25.23.21। ठीक, थर्ड इंटरवल इज 23.21 टू 24.5। okay, the next one is 24.5 to 25.79। ठीक, and the second last one is सेकंड क्लास में आपने सर 3.2 लिखा है, ये 23 हो गया। ये 23 है, 23.21। okay, the second last group is 25.79। मैं यहाँ से वैल्यू पिक कर रहा हूँ टेस्ट कोड से, to 26.91 and the last one is more than 26.9। ठीक है, ये कितनी क्लासेस बन गई? दीज आर द सर ये लास्ट वाली 27.41 आती है। ये वाली? यस सर। अच्छा, यहाँ हमने 0.5 लिखा, 0.5 लिखेंगे तो 27.4। थैंक यू। 27.41 and this one is 27.41। टेस्ट स्कोर इंटरवल आ गए। अब आप लिखेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, इसको हम डिनोट करेंगे FI से। FI, ठीक। एक्सपेक्टेड तो हमने पहले से अज्यूम की हुई है। एक्सपेक्टेड असल में वैसे टैली कर लें आप ना, तो टैली का कॉलम पहले बना लें फिर अपलोड कर लें। यहाँ ना मैं टैली का कॉलम बना लेते, 30 वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। ऑब्जर्व भी आप डायरेक्टली काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली काउंट में मिस होने का ना चांस होता है। तो वेल टैली का कॉलम मैं यहाँ बना लेता हूँ ताकि आपके लिए ऑब्जर्व इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इंसर्ट करते हैं यहाँ पे इंटायर कॉलम। ठीक, और दिस कॉलम नेम इज सपोज कॉल्ड टैली। देखिए टैली का कॉलम कैसे बनेगा। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 18। 18 कहाँ टैली होगी? लेस देन 21 में, पहले ग्रुप में होगी ना। ये सर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में, तो ये टैली कर दी हमने। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट वैल्यू पे है 25। 25 फॉल करेगी थर्ड ग्रुप, थर्ड में आएगी, फोर्थ में सर। फोर्थ में आएगी 24.5 से बाद। ठीक, यस सर। यहाँ पे आपने दिस वन टैली कर दिया हमने।
Next value 26. 26 is fall Fifth में again. सर Second last Fifth group. Tally कर दियो. Okay. 26 के बाद 27. 27 is also fall in this group. Yes, sir. तो ये टैली कर दिया, डबल 1 कर दिया. वैसे आप देख लीजिएगा कि लाइन की ऑप्शन कहीं मिलती है आपको कीबोर्ड पे तो वो यूज करें. जब आप मैनुअली कर रहे हैं तो लाइन यूज करेंगे. मैं 1 यहाँ लिख रहा हूँ, 1 मीन 1 लाइन. ठीक. ओके. 27 के बाद 26. 26 कहाँ फॉल कर रहा है? इन दिस ग्रुप. यस सर तो इसको हम Yes, sir. इससे फिर टैली कर देते हैं. ठीक. 26 के बाद 25. 25 is again fall this group. फिर है 20. 20 is fall. Sir, First one. 26 आपने कहाँ डाला सर? सर ये Third- 26 वाला 26 से जो नीचे है आएगा सर. सेकंड Fourth क्लास में में आएगा. आएगा ना. वो नीचे थर्ड होंगे, ऊपर 2 होंगे सर जो लास्ट में. Yes, sir. ठीक है. ये 2 होंगे, ये नीचे वाले 3 होंगे. हाँ. ये 2 होंगे. यस सर. ठीक हो ये गया. 2 है सर. ओके जी. Yes, sir. नेक्स्ट आप आए 22. 22 फॉल करेगा सेकंड ग्रुप में. Yes, sir. नेक्स्ट आए 10th वैल्यू पे 23. 23 फोर्थ ग्रुप में फॉल कर रहा है. थर्ड में. Third. थर्ड में 25. 25 फॉल कर रहा है दिस ग्रुप. Yes, sir. अगेन 25. अगेन 25. 28 फॉल करेगा लास्ट ग्रुप. लास्ट में. देखिए आपने ना डाटा को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बनाया है. लेस देन 21.59 और दिस वन इज मोर देन 27.41. तो सारा डाटा कवर हो रहा है इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सर 23 सेकंड में नहीं आएगा सर. यस सर 23 सेकंड में आएगा ना. ये क्या हो रहा है भाई? यस क्या कह रहे थे आप? सर 23 सेकंड में आएगा सर. सर सेकंड में आएगा ना सर. तो उसको हमने अच्छा सही है. 23 भी आपका सेकंड में आएगा. ये यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और ओके सेकंड में 2 हो जाएंगे और यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा. ठीक. ओके. अब हम आए 28 पे. 28 हमने कर दिया टैली. 22 अगेन 22 आएगा सेकंड ग्रुप में. ठीक. 22 के बाद 27. ठीक. फोर्थ ग्रुप इन दिस ग्रुप 20. फिर 20 जो आ रहा है वो आ रहा है पहले ग्रुप में. 20 के बाद 19 इज आल्सो फॉर दिस ग्रुप. अच्छा अब 19 यहाँ भी पे पहले मैं में. लाइन नहीं लगा सकता वरना 4 के बाद आप 5th पे लाइन लगाएंगे. मैं भी जस्ट ये सिंपल लाइन यूज कर रहा हूँ वरना जो आपका प्रोसीजर है टैली का वो फॉलो करेंगे. 31 जो आएगा वो होगा इन बिटवीन More than 27.41. 27. This one 26 fall in this group. Yes, sir. ठीक. और 27 also fall in this group. Yes, sir. ठीक है. 25 is fall in this group. Yes, sir. और 24 fall करेगा इसमें Third में. थर्ड ग्रुप में. 24 के बाद 21 fall करेगा फर्स्ट में. फिर 29 fall करेगा लास्ट ग्रुप. ठीक है. 3 टाइम होगी. पहले 2 थी अब 3 होगी. 28 is also fall in this group. Last one. 22 fall करेगा in this group. 24 Third fall one. करेगा in this Third, group. sir. ठीक है. सर दो वाले में. अच्छा इससे पहले वाले में फॉल करेगा जी. 24 यहाँ फॉल करेगा. 26 ने फॉल करना है सेकंड लास्ट. सेकंड लास्ट में. ठीक है. और
26 के बाद 25 फॉल करेगा अबव में। इस ग्रुप में, इस ग्रुप यस में सर। 24 फॉल करेगा थर्ड वन। सर 25 दो बार है। 25 दो बार है। अच्छा, यहाँ पे एक वैल्यू और आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लें। दीज आर 5 values, these are 4 values, these are 3 values, and these are 7 values, and these are again 7 and these are 4 values। और इनका सम कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। 30 वैल्यूज को टैली किया ना हमने, इसमें हमने कोई वैल्यू स्किप नहीं की। यस सर 30 आ रहा है। यस, सही आ 30 रहा आ है, रहा है पूरा सर, 30 आ रहा है। 30 आ रहा है। 30 ही आना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि हमने मतलब इन्हीं 30 वैल्यूज को टैली किया है अलोंग दीज क्लासेस। ठीक, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या अज्यूम की थी आपने हर क्लास की? 5 सम ऑफ 5 सर। sum of expected frequencies and sum of observed frequencies are same। ये हमने पहले से देखिए एक्सपेक्टेड 6 5 द 30 फ्रीक्वेंसी सर। कंप्यूट नहीं की हमने, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच क्लास 5 अज्यूम की है, तो मीन सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 30। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम 30, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमने कंप्यूट की है अलोंग द डिफरेंट क्लासेस। उसके लिए सारा काम हमने किया। अगर आप इस सारे को रिकॉल करें तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आप इसको ना मतलब कन्वर्सली देखें, ठीक है, एक तो ये है कि अब यहाँ से कन्वर्सली आए। फर्स्ट वी अज्यूम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास 5, तो फिर आपने अगर आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 रख रहे हैं तो यू हैव टोटल वैल्यूज आर 30। 30 को 5 पे डिवाइड करें तो मीन यू नीड 6 ग्रुप। तो ये के आपका 6 आ गया, ये दिस वन 30 डिवाइडेड बाय 5। तो मीन 6 ग्रुप मीन 100% डाटा वैल्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 100% डाटा वैल्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द 6 ग्रुप। तो साइज ऑफ ईच ग्रुप इज 16.67। तो उसके अगेंस्ट जी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दिस वन, दीज आर दी जी वैल्यूज। तो ये जी नंबर हमारे पास आ गए अपने जी टेबल से। तो इन जी वैल्यू से हमने टेस्ट स्कोर फाइंड कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली इस डाटा के मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन विद द हेल्प ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ गिवन डाटा। तो उससे टेस्ट स्कोर निकाले, टैली कर लिया, मतलब गिवन डाटा को टैली किया along these three group observed frequency values। I think इसके बाद तो अब आपके लिए इशू नहीं है। नेक्स्ट सर क्या करना है आपने? fi minus ei जी। यस, एनीवन वांट टू से? सर आपने कहा एज्यूम वैल्यू हम 5 लेंगे, तो वो सिर्फ इस सवाल के लिए या इस तरह के जितने भी सवाल हैं? असल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो यही होगा हमेशा। देखिए कि असल में ना आप उस सारे को समझने के लिए ना कंपेयर करें मल्टीनोमियल से। मल्टीनोमियल में जब सैंपल आप लेते हैं तो वो सैंपल आपका एक्स की फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही है ना कि आपने सपोज 500 का सैंपल लिया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को रिकॉल करें आप, हमने 200 का सैंपल लिया था, 200 व्यूअर्स का हु आर वाचिंग टेलीविजन ऑन सैटरडे इन बिटवीन 8 to 9। उसमें से एक नंबर था जो कि एबीसी टीवी चैनल को वॉच कर रहा था, एक नंबर था जो कि एनबीएस था, फिर सीबीएस था, मतलब सेकंड टीवी चैनल एंड थर्ड टीवी चैनल, और फोर्थ नंबर था जो कि इंडिपेंडेंट को कॉल कर रहा था। यस, ये रिमेंबर है ना आपको ये चीज? यस सर। अच्छा, अब आप देखें कि जो मल्टीनोमियल में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट 4 कैटेगरीज आई हैं। कैटेगरीज पहले से बनी हुई हैं, उसी के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड आपने निकाल ली। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना 4-5 कैटेगरीज पे तो कभी हो ही नहीं सकती ना। ये बात आप समझें कि नॉर्मल का डाटा जब आपने करना है तो नॉर्मली, वैसे भी आपने एक वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी पढ़ा था कि कोई भी डाटा सेट अगर लार्ज नंबर के अगेंस्ट नॉर्मल को फॉलो करता है तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि 5-6 ग्रुप होंगे। इसमें तो जाहिर है अब आपने देखना है वीकली डिमांड को देखना है। तो मैं कहूँ आप 2 हफ्तों की डिमांड ले लें और आप कहें कि इस बेस पे हम कह सकते हैं पिछले वीक में मतलब 24 सेल हुई थी यूनिट्स, इस वीक में 20 यूनिट सेल हुए हैं, तो क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है?
मतलब on the basis of 2 values or on the basis of 5 values or on the basis of 10 values, we cannot determine or we could not determine. हम दोनों cannot or could not जो भी आप यूज करें, we could not determine के this data follow a normal distribution. You must have a sufficient number of sample. Is it clear? यस सर। तो अब देखें सफिशिएंट नंबर में जाहिर है 50 होंगी, 70 वैल्यूज होंगी, 100 वैल्यूज होंगी, तो डाटा सेट आपके पास इस तरह से होगा। तो डाटा की फिर आप ग्रुपिंग कर लेंगे बाद में। असल में हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया कि क्लासेस बना ली है डाटा की। क्लासेस बनाने के लिए हमने नॉर्मल को फॉलो किया, एक क्राइटेरिया के तहत क्लासेस बनाई। ये देखें, ये हमने बेसिकली इन 30 वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया हमने यूज किया है वो कौन सा यूज किया है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास शुड बी 5, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस करके क्लासेस बना ली। एक होता है क्लासेस बनाना ऑन द बेसिस ऑफ रफ आइडिया कि आप खुद से एच को ज्यूम करते हैं और उसकी बेस पे क्लासेस बना लेते हैं, और एक होता है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफाइड कंडीशन क्लासेस बनाएं। तो चलें, मेरा ख्याल है ब्रेक कर लें हम या कंटिन्यू रखें? कर लें क्वेश्चन कंप्लीट? सर ये क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर ब्रेक कर लेते हैं। चलें, एफ आई जे एफ आई। अब जे का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। ऑब्जर्व माइनस ऑब्जर्व आर डिनोटेड बाय एफ आई माइनस ई आई, और इस पे लेंगे स्केयर पहले। ऑब्जर्व आर दिस वन माइनस एक्सपेक्टेड। पावर लेने के लिए हमें स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। Yes, now Excel sheet is visible? Yes, sir. यस सर। This one minus observe minus, यहाँ बाय चांस के दोनों सेम आ गए हैं, observe और expected, और इसकी पावर हमें चाहिए 2, क्लोज कर दिया। ये 0 हो गया ना टर्म, क्योंकि यहाँ ये रिजल्ट सेम है। ओके, इसको ड्रैग करते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट कॉलम इज ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड एंड स्केयर डिवाइडेड बाय 2। देखिए, ऑब्जर्व आता है दिस वन, सॉरी जो स्केयर आ रही है दिस वन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, इसको डिवाइड करते हैं। एक्सपेक्टेड इज, इसको ड्रैग कर लें, ये नंबर आ गया, इसका सम फाइंड कर लें। ये हमने इसका सम फाइंड कर लिया 2.8। इसमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बेसिक चीज ये है, इसको एंड से आप समझिएगा। फर्स्ट में एक एक्सपेक्टेड on the basis of expected frequency, on the basis of this assumption, which is the basic, which is the mean our chi-square distribution is valid if expected frequency of each class is 5। तो ये chi-square की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.8। मैं व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ। देखिए, chi-square is computed value of from Excel sheet 2.8, और this one has नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी बनी थी? 6, एंड साइज ऑफ ईच क्लास इज 16.67। नंबर ऑफ कैटेगरीज बनी थी 6, तो 6 minus 3 which is equal to 3. This one is a degree of freedom. पी वैल्यू फाइंड करें। आप जी टेबल पे जाएं, मुझे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 2.8 को सर्च करके पी वैल्यू बताएं। आप कोशिश करें साथ साथ सॉल्व करें, जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप टेबल सर्च करें, कैलकुलेटर ओपन रखें, इससे आप इंगेज भी रहेंगे और आप लर्न भी करेंगे। देखने से चीजें कभी भी नहीं आती हैं, चीजें हमेशा मतलब when you solve it, when you do it, then you will be able to solve next time or regenerate or replicate the same question.
यस, पी वैल्यू बताएं आप। lies between 0.5%, 0.05 and 0.025. अच्छा, 0.05 and 0.025. 0.025. देखिए काई स्क्वायर कंप्यूटेड वैल्यू इज 2.8. इसको सर्च करेंगे इन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये जो वैल्यू आ रही है, दिस वन इज पी वैल्यू इज फॉल बिटवीन 0.025 less than by 0.05. तो उसने तो अल्फा दिया था ना 10%. जो क्वेश्चन में अल्फा है, as given value of alpha is 0.05. So it means p value is smaller. Obviously p value is smaller than alpha. P value is smaller than by alpha. तो अल्फा है वो आपके पास है, इसको कैसे डायरेक्ट, as alpha is 5%, then p value is smaller than by alpha. Alpha is 0.05, which means we can reject it, not sample data support alternative hypothesis. Therefore alpha है 10%. 5 भी होगा तब भी रिजेक्शन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 10%. अल्फा 10% है. 10% बहुत हाई वैल्यू होती है, नॉन भी इतना हाई अल्फा रखते नहीं है. Okay, we can reject H naught. We can reject H naught. Conclusion क्या होगा? And conclude that वो जो सर डिमांड है वो इक्वल नहीं है. जो वीकली डिमांड है does not follow a normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर. Yes. And conclude that that a weekly demand of product does not follow a normal distribution. Normal probability distribution. चलें, the next approach is critical value approach. बिल्कुल सिंपल सा काम है. You can also draw the rejection region under critical value approach, that is CR approach. We assume that our null hypothesis is written in the form of right tail hypothesis. From section 12.1 to onwards, हमने आपको बताया था कि on all subsequent chapters we will assume that our alternative hypothesis is formulated in right tail form. So critical region is under critical value approach chi-square. Right tail में क्या बनेगी वैल्यू? Is greater if chi-square is greater than by
काई स्क्वायर ऑफ राइट टेल का मतलब है यूज अल्फा वन, मतलब वन टेल होगा ना राइट टेल, विद डिग्री ऑफ फ्रीडम k माइनस p माइनस 1, k माइनस p माइनस 1, k माइनस काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन बाय काई स्क्वायर अल्फा। आप जी टेबल पे जाएं, सॉरी काई टेबल पे जाएं एंड ट्रेस दिस वैल्यू, अल्फा इज 1% और k माइनस p माइनस 1 इज 3, 6 माइनस 3, तो 3 डिग्री फ्रीडम पे 10% पे वैल्यू बताएं क्या फ्रॉम काई टेबल। p वैल्यू होती है इनवर्स वैल्यू और जो क्रिटिकल वैल्यू होती है डायरेक्ट टैबलेटेड वैल्यू। यस, व्हाट इज दिस वैल्यू? यस, ये क्या नंबर आ रहा है? सर क्या बताना है? ये बताना है कि काई की वैल्यू 10% पे 0.1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पे क्या है। ओके, काई के टेबल पे जाएं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पे 0.1 पे वैल्यू बताएं क्या आती है। ओपन योर काई के टेबल। सर 6.251 6.251 ठीक। तो देखिए तो काय की वैल्यू थी वो 2.8 थी। As computed value of chi is 2.8 which is not greater than by, नहीं दोबारा देखें आप वैल्यू, आप इस वैल्यू को दोबारा देखें। सर 3 पे तो ऐसी वैल्यू नहीं है, वैल्यू डिग्री दोबारा ऑफ फ्रीडम 3। क्या वैल्यू आ रही है 3 पे? चले मैं आपके सामने काय का टेबल ओपन करता हूँ, फिर हम इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। लेकिन दिस वन, ये काय का टेबल है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.1 पे 6.21, तो फिर आपने मुझे पी वैल्यू क्यों दूसरी बताइए। लेकिन ना जब आप पी वैल्यू पे आएंगे तो 2.8 को सर्च करना है आपने, तो 2.8 कहाँ होगा? 0.58 से ग्रेटर है 2.8, 6.2 से लेस है, तो पी वैल्यू भी ये होगी ना। यस, काई टेबल आपके सामने विजिबल है? यस सर। मेरा ख्याल है थक गए हैं, आप ब्रेक कर लें। जैर, हाँ सर, ये काय का वैल्यू बाद में फाइंड करते हैं। हाँ, ये काई का वैल्यू बाद में फाइंड करते हैं, मैं भी यही कहने लगा था आपको। कभी कभी हमारे आपके ख्यालात बड़े मिलते जुलते होते हैं जैर। अच्छा सर हालात ही कुछ ऐसे हैं ना, क्या करें। चले जी, चले आप ब्रेक करें। वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ अराउंड 10 मिनट्स एंड वी विल मीट अगेन एट 11:35। ठीक है, 11:35 दोबारा मिलेंगे। ओके सर।
Good, welcome back. Are you here? Yes, sir. Okay. Yes, sir. We want to find before taking the break, we want to find the value of the chi-square against 3 degrees of freedom. This one. I hope a chi-square table is visible in front of you. That against 3 degrees of No, freedom. sir, table very. Chi-square table is visible? No, sir. Not visible. Now? Yes, sir. Okay. This one is a chi-square table. Against 3 degrees of freedom, value of the chi-square is 0.58 to 6.25. Mean our computed value is 2.8, which is fall between 0.58 and 0.25. It means previously we have maybe called trace wrong values. Mean when we say that p-values fall between 0.05 and 0.025, this one is mean the correct p-value, the range of the correct p-value is more than 10% and less than 90%. Yes? I'm not audible. Yes, any other student? All of you clearly heard my voice? Yes, sir. Is there any voice issue? किसी को आवाज में मसला आ रहा है? No, sir. अच्छा, आप ताहिर दोबारा से रिकनेक्ट हो. ये आता है इशू, उसको रिकनेक्ट हो. होपफुली आप the problem will be solved. Okay. देखें ये p वैल्यू जो है आपकी, वो जो पहले आप बता रहे थे वो तो नहीं है. p वैल्यू 7.8 और 9.3 के दरमियान तो नहीं है. Our calculated values fall between these two values. Mean p value is greater than by this one. पहले जो हमने कंक्लूजन लिखा है इसको बड़ा आप केयरफुली करें, अदरवाइज ये देखिए एक 10 नंबर से आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है. दिस वन, ये आपकी p वैल्यू नहीं है. Our p value is all between greater than 10% and less than 90%. Mean this one p value is not less than by alpha. Therefore, we can't reject H naught and conclude that the weekly demand of the product mean follow a normal distribution. Does not cover, हम इसको remove कर देते हैं. Follow a normal distribution. तो similar decision यहाँ पे भी आएगा. यहाँ वैल्यू ठीक बता रहे थे लेकिन वो उससे मैच नहीं कर रही थी. 6.28. Yes, the board is visible in front of you. Yes, sir. Okay, 6.251 the value of chi-square at 10 degree of freedom. 6.251. So our chi-square value is 2.8, which is not greater than by 6.21. It mean value fall in the acceptance region. That's why we cannot reject H naught. You may be called cannot reject or called accept H naught. Mean sample data support null hypothesis. Correct answer here है. The sample data support null hypothesis. We cannot reject H naught. We cannot reject H naught. Yes, is it clear? Okay. Tahir, you may start your presentation. Yes, Tahir, can you hear my voice? Okay, Bakhtavar. Any other student?
want to present the summary, may raise your hand. You may start now. Okay, sir. Someone, this is Swatavanu, and today I'm going to present on chapter number 12, comparing multiple proportions, tests of independence and goodness of it. So this case is about a company named as United Way of Greater Rochester, city of New York. This is a non-profit organization dedicated to improving the quality of all people. It is working in almost 7 countries, and how this does complete this mission is by meeting the community's most important human needs. And for this, the United Way, also known as Red Cross, do the fundraising campaigns. That funds are provided to hundreds of programs offered by 200 pro-service providers, other companies. These providers meet thousands of needs as physical needs, mental and social needs of people, and serve them, the people of all ages, background, and economic needs. The United Way conducted a survey to know more about how the community perceives the charity, the funds that they are raising, how they perceive about those funds. So what did their company do? That they conducted the focus group interviews, which were held with professionals, service people, and general worker groups. In this, after this focus group interviews, they obtained first-hand information on the perception. Based upon this information, they developed a survey, and they developed a survey. The questionnaire was pre-tested, modified, distributed to almost 440 individuals, and the descriptive statistics that were used in this were frequency distributions and cross tabulations, and these were provided. These data were provided from the data collected. Okay, so next one, they conducted the test on this data, the chi-square test. The important part of analysis was done using the chi-square test of independence, and one statistical test was to determine whether the perceptions of administrative expenses were independent of the occupation of respondent. It means वो कंपनी चेक कर रही थी कि जो expenses है उसके बारे में लोगों का क्या ख्याल है कि उनके उनके जो ख्यालात हैं वो उनके occupation से affected हैं या फिर नहीं है. So for this they developed a hypothesis test of independence. For this, the hypothesis were H0. The null hypothesis was that perception of United Way administrative expenses is independent of the occupation of respondent. And the alternative hypothesis is perception of United Way administrative expenses is not independent of occupation. It means के उनके जो expenses का perception है, जो लोग सोचते हैं उसके बारे में, वो उनके ख्यालात occupation से related हैं या फिर नहीं है. And for this, the categorical data was done. 2 questions in the survey provided the categorical data for the statistical test. Number question 1 was obtain the data on the perception of percentage of funds that was going to administrative expenses. कि जो भी funds का जो portion है वो administrative expenses में जा रहा था, तो उसके बारे में उनके क्या perceptions थे. For this, they had provided the categories like up to 10%, up to 11 to 20%, or 21% or more. Okay, these were the categories. And the question number 2 was that asked about their occupation. What was the occupation of respondent? So the result was that the test of independence led to rejection of null hypothesis. And the null hypothesis was that it was means independent of occupation. So the conclusion is that the perception of United Way administrative expenses is not independent of occupation of respondent. It means that perception is affected by the occupation. So the actual administrative expenses was less than 9%, but the respondent perceived that it is 21% or more. Hence, many respondents had inaccurate perceptions because
These people were like production line, clerical people, salesperson, and they almost had the wrong perception about the expenses of the organization. And the effect of the study was that the study helped in a united way to do the adjustments to fundraising programs and activities. This was all about this, and test was about, I think this was the ANOVA test through which they conducted the Chi-Square test of independence. Thank you very much. हेलो सलाम अलैकुम सर। Yes. सर मैं नेमत अल्लाह सर, मेरी जो यहाँ पे ना मुहर्रम की वजह से नेटवर्क इशू चल रही है सर। ये मेरे ख्याल से सारा दिन ये नेटवर्क ऑफ होगा ना, जिसकी वजह से मेरा कनेक्शन वो नहीं होगा। नेमत अल्लाह, I have already read your text. तो अगर आप ओके सर, कंटिन्यू रहा तो अटेंडेंस के टाइम पे I will mark you as a present. ओके सर, क्योंकि मैं अभी दूसरों की जगह है ना, जब तक ये नेटवर्क पता नहीं, मेरे ख्याल से आशुरा तक ऐसे ही होगा, सही है, इश्यू होगा। it's okay, that's okay. ओके, थैंक यू। Yes, Bakhtawer, I have a question from you, from your presentation. Yes, sir. ये जो आपका hypothesis है, perception of the United Way administrative expense is independent, ये आप काय का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे to test this hypothesis? अब तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया ना? How we Sir, test? formula? Sir, we will first, like you did, we will first calculate the observed frequencies and the expected frequencies, and then we use the degree of freedom, and then we calculate the expected values, and we then compare with the observed values. And if the observed value of chi-square test is greater than the critical value, yes, sir. I have a very precise question. As per your understanding, this hypothesis is linked with section 12.1, 12.2 or 12.3. Which section? Sir, I just have to look at these sections first, Yes. I think. 12.1, 2, and 3, this is. I think, sir, this is 12.2, test of independence. Test of independent mean two categorical variable are independent or not? Yes. This is like Yes, sir. 12.2. Okay. Yes, sir. What is the impact of the conclusion? I mean, what types of steps we will take after rejecting H naught and in case of accepting H naught? Yes. Implication क्या Sir, होगी? so I think they would improve their activities, like they would inform their group or other people that are working in that organization that they should know more about this whole program and how it works, and what are these expenses or the other like expenditures or the fundraising amounts. So because this is very important for these people that are working in the organization, they must know about the expenses and the amounts, so the effective way to use those funds can be applied on that, because these all people were from these working groups like production line, clerical, and sales professionals, and they had the wrong perception about the expenses. So it means they should know more about this program. So I think they might conduct some awareness program with those people and improve this program. Like, so the presentation is due for all other students. Okay, you have one more day to present the same summary of chapter 12, and from Wednesday your presentation topic is from chapter 13. Okay, you have one more day to present this summary. Present the same summary. Now we are starting the next chapter, that is experimental design. Basically, we will study partially study this chapter. That is, first one is yes, book is visible in front of you. सर ये बहुत है सर
सर ये कल करें 12 नाउ सर, 12 हो गए। अभी टाइम आगे पूरा क्या हो गया पढ़ेंगे? Okay, we have already half hour, मतलब we have start almost half hour late, 30 minutes late. We mean this class, we have started this class around 30 minutes late. सर हमारा सेकंड क्लास भी है। Yes, मैं just इसको इंट्रोड्यूस करूंगा चैप्टर 13 को, ताकि एक कल आपको हम उसको न्यूमेरिकल काम करवा सर सकें। कल से न्यू डे होगा ना, न्यू चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, आज छोड़े सर। आज थक भी गए। माइंड फ्रेश वैसे भी नहीं है सर। न्यू डे तो आज है। सर कल माइंड ये कौन है सर न्यू कल डे माइंड वाला? फ्रेश मखलूक? होगा तो सर अब समझ नहीं आएगा प्लीज सर। अच्छा यस सर, कल से यस सर, आज वो पिछला Yes, वाला sir. रिकॉर्ड क्लियर करते हैं, कल न्यू स्टार्ट करेंगे। नहीं, आज तो हमें करेंगे स्टार्ट ना। सर 10 सर ये मिनट रिकॉर्ड अटेंडेंस में भी लग जाएंगे सर, छोड़े। वो क्या कहते हैं शायर लोग? हाँ सर, बस एक शेर बता दे बस। सर कहते हैं क्लास एंड करें अभी। शायर कहते हैं कि वो जो यकीन की राह पे चले, उन्हें मंजिलों ने पना दी, और वो कदम कदम पे बहक गए जिन्हें वसवसों ने डरा दिया। सर तालिबानों की खुशी में आज छोड़ दें सर। हाँ के लगा दी सर आप। हमें हमें कोई नहीं खुशी सर, थोड़ा नहीं है। पढ़ते हैं सर। वी आर हाईली प्रो पाकिस्तानी। एक बात याद रखिए आप, वी सर आर कसम है आपको तालिबानों सर की एक बार छोड़ कुछ लाइन दें। तक गए सर। देयर इज नो शेयर तो पॉलिटिकल पूरा डिस्कशन, नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन दिस क्लास। वी आर हाईली प्रो पाकिस्तानी। ओके सर पढ़ते हैं सर, थोड़ा पढ़ते सर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, सर पाकिस्तान 14 जिंदाबाद। और मुझे स्टार्ट करना है चैप्टर 13। प्लीज सर। ठीक है सर 14 अगस्त की वजह से छुट्टी कर लेते हैं सर। अब जी तो जी सर, 15 स्टार्ट अगस्त आ गई है। सर कौन तो सी 14 अगस्त 14 अगस्त है? सर। शफीक, अब तो आज तो 16 अगस्त है बच्चे। सर हमने 14 अगस्त में मनाया नहीं है तो आज मना लेते हैं सर। अच्छा चले, मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, जस्ट मुझे इंट्रोड्यूस करने दें, थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए वन थिंग कि हम इस चैप्टर को, इसको भी और इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है 14, इन दोनों को पार्शली पढ़ेंगे। चैप्टर 14 का तो एक पोर्शन आप बिजनेस स्टैट्स में पढ़ के आए हैं, रिग्रेशन का। अब हम उसका इन्फ्रेंस का काम करेंगे कि जो आपने रिग्रेशन पैरामीटर है उसको आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये मतलब डिफरेंट चीजें। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम कहते हैं एनोवा, एंड दिस वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसके हमने जो सेक्शंस पढ़ने हैं वो हैं 13.1, that is introduction to experimental design and analysis of variance. ठीक, 13.2 analysis of variance and the completely randomized design, इसको हम कहते हैं CRD। ठीक, 2 डिजाइन हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वन मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर, जो अभी हमने मल्टीपल कंपैरिजन, ये 13.1 13.3 सेक्शन जो है, we also already discussed this one in chapter 12, जब हमने प्रपोर्शन को टेस्ट किया था फॉर मोर देन 2 प्रपोर्शन, तो determine which pair of the proportions are equal or not, with the help of we will use the multiple comparison test, or we have used the multiple comparison test to determine which pairs are significant. तो सिमिलरली यहाँ पे हमारी जो टेस्टिंग होगी वो मोर देन 2 मीन की टेस्टिंग होगी एक्चुअल में। तो फर्स्ट 3 सेक्शन इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, 13.1, 13.2 एंड 13.3। ये 13.4 और 5 रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, नहीं 13.4 तक है, सॉरी। 2 डिजाइन हम इसमें पढ़ेंगे। 13.1 is just theoretical introduction of this chapter. 13.2 and 13.4 मेन 2 डिजाइन हम पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और दूसरे को हम कहते हैं 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या RBD और CRD। और 13.3 जो है ये कंपैरिजन है, ये 13.2 में भी यूज होगा, 13.4 में भी यूज होगा, कि अगर आपका मोर देन 2 मीन की टेस्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ F टेस्ट, मतलब नया टेस्ट कोई नहीं होगा इसमें, F टेस्ट के थ्रू हम इसको मोर देन 2 मीन को टेस्ट करेंगे। और इफ इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ H0, use the multiple comparison test to determine which pair of the means are equal and which are
अनइक्वल बंदे। 13.1 जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, तो बेहतर ये है कि आप एक तो वेडनेसडे से ऑनवर्ड नेक्स्ट 2 जो क्लासेस होंगी उनमें आपकी प्रेजेंटेशन आपने होगी दिस वन, ठीक है, बल्कि मार्केटिंग सर्विसेज, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, इस पेज को, इसकी समरी को एक्सप्लेन करना है। कल जो है हम कल की क्लास में 13.1 और 13.2 भी हम कर लेंगे कल की क्लास में। वेडनेसडे को छुट्टी नहीं है सर? वेडनेसडे की छुट्टी का कल आपको बताएंगे, अभी नहीं पता। 14 अगस्त को तो मैंने ऑफ किया था, इसमें हमारे पास कुछ सिलेबस की भी ये है कि हम टाइम से कंप्लीट कर लें, तो चले हम कल बताएंगे हम, और कुछ भी ऑफ हुआ तो देखेंगे, ओके सर। कल बताएंगे। ओके, now today is 16 of August. Okay. Abdullah, Adil, Adil present, sir. Asadullah. Asadullah present, sir. Asadullah, was you present in last class on Wednesday? No, sir. Okay. Bilal, Sultan and Ikra. Present, sir. Ikra. Kiran. Present, sir. Nematullah, Rizwanullah. Present, sir. Rizwanullah, sir. Okay. Shafiq Rahman, Shazib. Shafiq Rahman present sir. Shazib present, sir. Ghufran Ahmed, Mujib Ahmed. Ghufran and Mujib. Okay. Suhail Ahmed, Uzair Ahmed, Zuhaib Ahmed. Uzair Ahmed present, sir. Sohail Ahmed present, sir. Zohib Ahmed present, sir. Okay. Faizan Ali, Tahir Ali, Arifa Batul. Faizan, Tahir Ali, Tahir तो प्रेजेंट था, आरिफा बतूल, आरिफा is not here. राशिद हुसैन, वकार हुसैन, इब्राहिम ताहिर. Present, sir. Waqar Hussain. राशिद, इब्राहिम, अब्दुल जब्बार, अली जान. Present, sir. Ali Jan. अब्दुल जब्बार. अरसलान खान, हिरा किरण. Salan Khan, sir, present. हिरा. Hira Kiran present, sir. अब्दुल मजीद, मोहम्मद मलूक. Mohammed Maluk present, sir. अब्दुल मजीद. राहील नवाज, बख्तावर नूर, वर्षा रानी. Travel Noor present, sir. सर वर्षा 11 बजे तक मीटिंग Sir, है, तो इसके Abdul बाद Jabbar is डिस्कनेक्ट हो गया है, तो काइंडली की कंसीडर कर लें। internet issue. He Okay, was Varsha is present throughout the present. class. Okay. And Raheel. Sir, Abdul Jabbar was present throughout the class, sir. Sir Bakhtavar. जबार प्रेजेंट है, प्रेजेंट था. Yes, sir. Yes, वो sir. था Connectivity लेकिन issue है उसका, sir. connectivity issue. ओके ओके. Sir Bakhtavar Noor present. यस बख्तावर है मार्क में. वर्षा, वर्षा इज आल्सो प्रेजेंट. सर वर्षा 11 बजे तक मीटिंग में थी, उसके बाद इसका डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके. काशिफ रशीद, हसनैन रजा. Sir, Kashif Rashid present, sir. Hasnain Raza present, sir. सायरा सईद, मोहम्मद सलमान एंड बोथ सलमान. Saira Singh present, sir. Ji, sir, both Salman are present. ओके जी. Present, sir. साकिब, सारिम जलाल, अबू बकर सिद्दीक. सारिम, साकिब जलाल,
Sorry, Sarim Jalal. Sarim is also present. Message आया हुआ. Sir, Salim. Mohammed Salim present, sir. Okay. Abu Bakr. Mohammed Salim Jalal present, sir. Okay. Abu Bakr. Okay. Ramiza. Saklan Zahid. Diwan. Sir, Saklan Zahid present, sir. Okay. Divan is present. Okay. Ramiza, are you present? Yes, sir. Present. Diwan is also. Duai Mariam Shumaila Munsif Ali. Present, sir. Shumaila. Present, sir. Munsif Ali. Shumaila. Present, sir. Present, sir. Okay. Munsif Ritesh Kumar Nisha Nimra Gul. Present, sir. Nisha Nimra Gul. Present, sir. Okay. Ritesh, are you here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Ritesh. Saeed Sir, Ahmed. नींद में रहते. सईद अहमद जुबैर अहमद. आपको कैसे पता वो नींद में है? कौन है नींद वाला? ओके, सईद अहमद, जुबैर अहमद, अली हैदर. समीउल्लाह. ज्योति is here. Present, sir. Okay. Kailash Kitari. Okay, Kailash. Yes, Samiullah, are you here? सर समी है, अभी अभी डिस्कनेक्ट हो गया. Okay, Samiullah is here. Disconnected. Lost his Mujib Ahmed. सर मुजीब का ना मैसेज आया हुआ. मैसेज तो आ जाता है एंड टाइम पे ना. सर ये मेरी भी आप पहले समी और मुजीब का सेम प्रॉब्लम है, अभी अभी डिस्कनेक्ट हो गए. मुजीब एंड समी, ठीक है. इब्राहिम, आप पहले कहाँ थे? आप क्लास में कब आए हैं? सर मैं ब्रेक के बाद, सर मेरा एक इंटरनेट इशू हो गया था, उस वजह से मैं ब्रेक के बाद नहीं अटेंड की. सर अभी आया हूँ मैं, तकरीबन 5 से 10 मिनट हुए. ओके. सर इकरा इज प्रेजेंट. इकरा, आपने व्हेन यू जॉइन द सेशन? सर समीउल्लाह प्रेजेंट. सर थोड़ा मेरा नेट का इशू था, मैं अभी Sir, I have joined on time at 9 a.m. 9 a.m. Okay. Yes, sir. But facing some connectivity issue. Yes, sir. Okay, ji, thank you very much. We will meet on inshallah. प्रेजेंट कर दिया सर मुझे. Samila, I have already marked your presentation. Sorry, present. ठीक है, थैंक यू सर. Okay. क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था ना अभी थोड़ा. Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू.